In case if I am not audible, you just let me know. Shivam? Okay, sir. Yeah. Somebody has to be interactive. Okay, I'll present it. Actually, I'm struggling for 45 minutes. Last 45 minutes. Yes, sir. Yeah, now the screen is visible. Huh? So yesterday, hello, the screen is visible, no? Yes, sir, it is. Hey, Shivam, can you read this screen? Hello? Yes, sir, I can. Just read it. So button stop. Okay. Then, can you see my cursor? Yeah, sir, the stock and Yeah, the so punch hole. yeah, the stock is nothing but strip. Hmm. And in this, the direction will be from right to left. That is Right as here. shown this feed. Yes. All right. Now, what is the purpose of this button stop? That is, it has to stop the strip at a proper distance. Like say now there are two holes to be punched now. This is one and this is another. Okay. So initially when you are feeding the strip, so it has to stop somewhere, correct? This strip has to stop somewhere, right? So for that we have provided a button stop. So button stop is nothing but pin kind of things, a collar, a pin with a collar here. Okay. So this is tight fitted. Now this pin, yesterday I was in a, this was actually taken in a hurry, so you may not have understood. So that's why I am repeating this. So Ashish, can you explain how this button stop will work? Let me see whether you have understood. What, sir? Have you understood how this button stop will work? Sir, Can you? the strip uh, is fed from right to left. So like Okay. मतलब पहले होल में होगा हाँ पंच से हाँ, and नहीं then वो राइट टू लेफ्ट स्ट्रीट फिर होएगा, लेकिन वो यहाँ पे अटकेगा ना। एज्यूम करो इधर कुछ भी नहीं है, ये बटन स्टॉप हाँ है। जैसे फिट करेंगे ना, तो ये जो बटन स्टॉप का जो कॉलर है ना, कॉलर यू अंडरस्टैंड ना, वो ऊपर yes आया हुआ है, ठीक है। सो वहां पे जाके वो टच करेगा, हाँ, स्ट्रिप। हाँ ओके। सो हाँ so बोलिए। जब तो पंच ये नीचे आएगा पंचिंग तो वो पंचिंग पंच हो होने के जाएगा। बाद वो बटन भी नीचे जाएगा स्प्रिंग लोडेड बटन रहेगा तो and हाँ then we अभी can move the strip forward and then the button comes up. हाँ अभी ये कैसा रहता है, ये यहाँ पे अभी दिस दैट इज अनदर मैकेनिज्म दैट यू कैन हैव अ स्प्रिंग लोडेड बटन। ओके। लेकिन यहाँ पे वो स्प्रिंग दिखाया नहीं है। तो जनरली मैंने yesterday कैसा बोला था कि दिस बटन नो, इसका जो कॉलर है ना, इट इज हार्डली लाइक सपोज इफ दिस थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप इज से 2 लेट्स से 2। ओके, सो दिस बटन का जो कॉलर है ना, वो 0.5 ऊपर आता है ये फेस के ऊपर। ओके, सो 0.5 ऊपर आता है, 0.2 टू 0.5, तो स्ट्रिप जाके उसको अटकता है। ओके। नाउ यहाँ पे क्या रहता है, एक आदमी खड़ा रहेगा। सो व्हाट यू विल डू, मोमेंट दिस रैम गोज अप, पंच गोज अप, वो क्या करेगा, जो स्ट्रिप है ना उसको पुल करेगा। नाउ सीन दिस इज ओनली 0.5 अप, अंडरस्टैंड नो, ओनली 0.5 अप, वो स्ट्रिप है वो इसके ऊपर से आसानी से आगे आ जाएगा। ओके। और जैसा ये होल इसमें आ जाता है तो होल को वो अटक जाता है। सो ऑपरेटर हैज टू चेक दिस, हाँ, मतलब ही हैज टू पुल इट प्रॉपरली एंड ही हैज टू अगेन लोकेट इट, मतलब वो जो स्ट्रिप है उसको थोड़ा ऊपर उठा के खींचना है, और बाद में जैसा ही होल आता है उसमें वो बैठना है। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर मैं क्या बोला हूँ आशीष? Yes sir. Other way is that you said that spring loaded. Huh? It has to be spring loaded button, so that when it goes up, this has to go down, so that the strip will move ahead. Okay, बराबर ना, strip will move ahead, बराबर है। Yes हाँ sir. एंड जैसा ये स्ट्रिप आता है, जैसा ही यहाँ पे होल आएगा, ओके, सो बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग प्रेशर दिस बटन विल कम अप। ओके। So this is the most common way
of locating the strip. Other way is that you have a feeders. Feeder में कैसा रहता है, it will move, the strip will move as per the pitch. आपका जो भी pitch है उसके हिसाब से जो strip है वो move होते रहेगा. So you don't have to have a stop either. So that is the purpose of the stripper. Is it clear, button stop? Because this is important from the examination point of view. Because the question which will be asked will be explain different type of or state the different type of stops. When I say state, that means you have to just write on the names. Huh? So for the 2 marks, we don't expect that you should explain each and every. Even for the 5 marks also, you cannot examiner cannot expect that you should explain each and every stop. So it will be like state the different type of stops and explain any one or explain latch stop or explain uh, button stop. Now here it is, see, yeah, this is another way. This is called the latch stop. So ये कैसे रहता है, ratchet and pawl. Ratchet and pawl arrangement जो अपना turret लेग पे रहता है ना, turret लेग पे turret indexing के लिए. So जैसा ही ये जो है, this is your follow the pawl and this is your ratchet. ये ratchet अभी क्या है, ये strip है. तो strip is going from right to left. ठीक है. So मान लो कि अभी फर्स्ट टाइम पंचिंग हो रहा है, तो दैट टाइम नाउ ये जो स्ट्रिप है, दिस रैचेट है, आई मीन दिस इज अ पॉल. ये जो पॉल है यहाँ पे अटका हुआ है. ओके. जैसे अभी पंचिंग हो जाता है, पंचिंग हो जाता है, तो यू हैव टू अगेन पुल दिस. अगेन इट विल बी अ मैनुअल मेथड. सो जैसा ही ये पुल करते हैं तो क्या होता है, ये जो पॉल है, दिस इज नॉट अ रैचेट, दिस इज कॉल्ड एज अ पॉल. ये पॉल पॉल है वो क्या हो जाता है, उठ जाता है. ओके. सो स्ट्रिप आगे आ जाता है. ओके. सो अभी पॉल जैसे ही उठेगा ना, तो इट विल रिमेन ऑन द फेस ऑफ द स्ट्रिप. इट विल रिमेन ऑन द फेस ऑफ द स्ट्रिप. नाउ ये स्ट्रिप आगे जा रहा है, मोमेंट इसको इट दिस होल कम्स बिलो दिस पॉल. ओके. सो द पॉल विल सिट इनसाइड द स्ट्रिप और यहाँ पे आपका स्ट्रिप रुक जाएगा, फिर अगेन पंचिंग हो जाएगा. ठीक है. देन अगेन पंचिंग, जब पंच अभी ऊपर जाएगा, अगेन द पर्सन हैज टू लिफ्ट, पर्सन हैज टू आइदर लिफ्ट द पॉल और ही हैज टू जस्ट पुल द स्ट्रिप. हाँ. जैसे ही पुल स्ट्रिप करता है तो क्या हो जाएगा, पॉल आपका ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है. ठीक है. एंड द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड. इज दिस क्लियर? दिस देयर इज नो रैचेट, दिस ओनली पॉल. हेलो आशीष, इज दिस क्लियर? Yes, sir. कौन? शिवम, समझ हे पॉलचे अरेंजमेंट समजले? पॉल म्हणजे Yes, sir. इट्स काइंड ऑफ अ समजलं. हुक. हुक आहे तो जर सडकणार आणि जेव्हा आपण स्ट्रिपला खेचणार तेव्हा तो हुक उठतो आणि स्ट्रिप पुढे येते. सो दिस इज अगेन मैनुअल. नाउ दिस इज ऑटोमेटिक. ये जो है आपका ऑटोमेटिक फ्लॉप है. तो ऑटोमेटिक में क्या होता है, जैसे ही आपका ये पंच ऊपर जाता है, ओके, ये पंच ऊपर जाता है, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा और क्या करेगा, ये दिस इज द फलक्रम, तो उसको दबाएगा. इट विल प्रेस दिस. ऐसा ही इट विल प्रेस दिस. ये जो पिन है और बटन है, वो ऊपर आ जाता है. पिन या बटन है दैट विल कम अप. पिन या बटन है दैट विल कम अप एंड देन स्ट्रिप, आपका जो स्ट्रिप है दैट विल मूव. स्ट्रिप है दैट विल मूव. ओके. एंड नाउ एट द सेम टाइम द पंच विल ऑल्सो कम डाउन. सो जैसे ही पंच नीचे आ जाता है, वो स्टॉप है वो एक्टिवेट हो जाता है. So this is a kind of a automatic stop which Ashish was telling that it is a spring-loaded button. Okay, so moment the punching is done, the button moment when the punch goes up, that time क्या होता है, स्प्रिंग दब जाता है, जो आपका बटन स्टॉप है वो रिलीज हो जाता है एंड देन स्ट्रिप है वो आगे मूव कर सकते हैं. ठीक है. स्ट्रिप है आगे मूव कर सकते हैं. बट इसको क्या है, ऑटोमेटिक स्टॉप में यू हैव टू push the spring automatically. So there has to be some kind of a pusher arrangement, so that the strip is pushed. Okay. And then moment that hole which has been punched, it comes again, the button stop, it comes up and it stops the strip. Now this is solid stop. अभी ये जो this is called the solid stop. Now where is the stop? Here is the stop. I hope you can see this. See this carefully. Study this drawing carefully, because this is again the most basic type of stop. This is most basic type of stop. So here now strip
हाँ, स्ट्रिप क्या हो गया, ये इधर स्टॉप को अटक गया दिस स्ट्रिप, ओके, एंड देन पंचिंग और वॉट एवर ऑपरेशन जो भी है इट इज डन हियर. नाउ व्हाट हैपेंस, moment the operation is done again, the operator has to pull the strip over the stock, pull the strip over the stock, ठीक है. एंड जो पंच होल है, जैसे ही पंच होल ये स्टॉप में आ जाता है, स्टॉप इज नथिंग बट इट्स लाइक अ बटन ओनली, और बटन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टॉक, stock stop. Button stop can be also called as a stop stop. So this is nothing but it is same as a button stop. I hope you are understanding. If you don't understand, you please ask. Don't hesitate. स्टार्टिंग स्टॉप मतलब कैसा रहता है कि इवन दो यू आर यूजिंग ग्रिपर्स, ऑटोमेटिक ग्रिपर्स और ऑटोमेटिक फीडर्स, इफ यू आर यूजिंग ऑटोमेटिक फीडर, जो ऑटोमेटिक फीडर है उसका पर्पस क्या रहता है, इट कीप्स ऑन पुशिंग द स्ट्रिप at the desired pitch, at the desired distance of the pitch, it keeps on pushing the. लेकिन जब भी फर्स्ट टाइम रहेगा, वेरी फर्स्ट टाइम, ओके, सो आपने प्रेस चालू किया और फ्रेश, यू हैव नो यू हैव पुट द फ्रेश स्ट्रिप फर्स्ट टाइम, दैट इज फर्स्ट होल आपको पंच करना है, ओके, सो दैट टाइम यू हैव टू स्टॉप द स्ट्रिप, isn't it? Stop the strip initially आपको. See, there are two things. One is the distance of the first hole from the end of the strip. Okay, that is when you are punching the hole first time. And second thing is distance between the two holes. That is pitching. Okay, the pitching will be done by the button stop or the automatic stops or by the automatic feeder. But what about the initial setting? That is the distance of the first hole from the end. So that time this stop is used, and that is what is called the starting stop. So starting stop में कैसे रहते हैं? This is your screw and you have a coil spring. Okay. So it's like a plunger. So plunger क्या करता है? Strip को stop करता है. Okay. So you have to push the strip startingly, and then this plunger which comes, okay, that stop the strip. हाँ, जैसा ही पंचिंग हो गया, स्टॉप हो गया, देन हम लोग क्या करते हैं, ये जो है प्लंजर है उसको खींच लेते हैं और उसको लॉक कर देते हैं, एंड देन वी डोंट यूज अनलेस एंड अनटिल द स्ट्रिप इज ओवर. पूरा स्ट्रिप खत्म होने के बाद व्हेन यू लोड अनदर अनदर स्ट्रिप, सो दैट टाइम दिस विल बी यूज. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग स्टॉप. तो स्टार्टिंग स्टॉप का फंक्शन क्या रहता है, इट इज यूज ओनली एट द स्टार्ट, इन द बिगिनिंग. Okay, now the strippers. Just a minute. Just hold on. Sir is calling.
Hello. Yes, Shiva. Hello, sir. Hello. Some Yeah. students are waiting in the queue. Oh, okay. I admitted them. Yeah. So now, what is the function of the stripper? Can anybody tell me? Yesterday I had told. What is the use of stripper? Akash, can you tell me what is the use of stripper? हेलो. नहीं है तो नहीं मालूम तो नहीं बोलो. आकाश. What's a network है थोड़ा नेटवर्क का इशू था बोल सर What is the use of stripper? Yesterday I told no. यूजर Stripper. You can read स्लीपर this no. Fixed stripper करके ऐसा लिखा है ना यहाँ पे. हाँ सर हाँ. Can anybody tell? 21-20 वाले हैं 3-4 जन वो तो बताओ. आशीष. सर बोलो. जब पंचिंग होने के बाद जब पंच ऊपर आता है तो स्ट्रिप का हाँ. टेंडेंसी है कि स्ट्रिप भी ऊपर उठेगा तो लाइक वो हाँ. उसको नीचे दबा के रखता बराबर. वेरी गुड. हाँ. सो जब भी वेनेवर नाउ पंचिंग हो गया. हाँ तो क्या व्हेन इट इज कमिंग अप. हाँ तो क्या होता है. इट देयर इज अ टेंडेंसी दैट स्ट्रिप भी थोड़ा उठ जाता है और इट कम्स विद द पंच along. तो इट इज वेरी डेंजरस. ओके सो दैट कैन कॉज एन एक्सीडेंट. रहा ना स्ट्रिप ऐसा ऊपर आ रहा है तो और कैसा भी वो फ्लाई ऑफ हो सकता है ना एंड देन इट कैन कॉज द एक्सीडेंट. तो स्ट्रिप को दबा के रखने के लिए यू शुड हैव समथिंग a plate kind of arrangement. That is what is called as a stripper. And then there are different type of strippers. So as I have been telling you again and again, the stripper is nothing but I mean the strip is nothing but the stock. तो ये आपका स्ट्रिप है. दिस ये जो काला कलर से दिखा है दैट इज अ स्ट्रिप. और दिस इज व्हाट इज योर स्टॉक गाइड. स्टॉक गाइड इज नथिंग बट द स्ट्रिप गाइड. ओके. तो ये जो है नॉर्मली ये जो विड्थ है. इफ यू आस्क फॉर coiled strip. So coil strip if you ask for, so उसका जो width है that is 25 and thickness is say 2 mm. So you reasonably get that width 25 plus minus 0.1 में आपको मिल जाता है and जो thickness है that also you get reasonably within plus minus 0.02 because it is ground. The strip is cold rolled and it is ground. तो ये जो स्ट्रॉन्ग गाइड है suppose if this width is 25 then strong guide will be approximately 25.5. हाँ मतलब 0.25 का क्लियरेंस रहेगा हर साइड. सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टॉक गाइड. वो जो स्ट्रिप है ना वो बराबर गाइड करेगा. अदरवाइज स्ट्रिप कैन मूव ऐसा लेफ्ट राइट स्ट्रिप कैन मूव. सो लाइक अ स्नैक. सो आपका जो स्टॉक गाइड है दैट विल गाइड द स्ट्रिप. इट विल नॉट अलाउ टू मूव द स्ट्रिप हियर एंड देयर. नाउ उसके ऊपर आपका स्ट्रिपर है. अभी ये जो स्ट्रॉन्ग गाइड है इसका थिकनेस कितना रहता है. सपोज इफ दिस इज 2. ओके सो स्ट्रॉन्ग गाइड का थिकनेस विल बी अराउंड 2.5. सो यहाँ पे ऊपर क्लियरेंस रहेगा 0.5. तो बाद में इसका मतलब क्या. इसके ऊपर आपका स्ट्रिपर है तो इसका मतलब क्या अगर स्ट्रिप उड़ भी जाए तो इट विल जस्ट लिफ्ट ओनली 0.5. इट विल नॉट लिफ्ट मोर देन 0.5 क्योंकि इसके ऊपर आपने स्ट्रिपर रखा है. ओके दिस स्ट्रिपर तो स्ट्रिपर उसको होल्ड करके रखेगा. So even stock guide का thickness suppose if this is 2 stock guide का thickness आपने 2.2 रखेगा तो भी चलेगा. Absolutely no problem. Hmm? It depends upon what kind of strip, what is the size of the strip that you are getting. It depends upon that. But generally, since the strips are cold rolled and it is ground, so you get a tolerance of 0.2 plus minus 0.02. Even if it is not ground, generally most of the cases it is CRCS. So CRCS का मतलब है cold rolled carbon steel. सो यू गेट रिजनेबली विद इन 0.05. तो अगर आपका स्टॉक गाइड इवन 0.1 भी रहेगा ज्यादा तो भी चलता है. ओके. सो फिक्स स्ट्रिपर मतलब ये जो स्ट्रिपर है स्ट्रिपर इज नथिंग बट अ प्लेट काइंड ऑफ थिंग. ये जो स्ट्रिपर है वो परमानेंटली बोल्टेड रहेगा फिक्स स्ट्रिपर इसके साथ ही. तो ये है आपका मूविंग साइड और ये आपका फिक्स साइड है. सो दिस इज आपका ये रैम है. ओके. और दिस इज ये पंच है. ओके एंड दिस इज योर डाई. ये आपका पंच है एंड दिस इज योर डाई. ओके. सो यहाँ पे ये फिक्स रहेगा एंड दिस पंच विल बी मूविंग अप एंड डाउन. So the stripper will be bolted to stock guide. It will be bolted to the die.
Then you have a spring. There are different type of strippers. So एक fixed stripper हो गया. Now this is your spring stripper. The spring stripper है. Okay, so this stripper है that is fixed with the help of a spring. It is fixed with the help of a spring. So क्या होएगा? हाँ, when it is coming down, somebody has joined or somebody has left. वाह, अभी खत्म होने के टाइम आ रहा है. So this stripper is spring loaded. So spring loaded का function क्या है? So when it is coming down, punch is coming down. So that time this stripper will also come down. Okay, because it is bolted to this moving hub. It is bolted to this moving portion. So when it comes down, okay, it will hold a strip. It will hold a strip. Okay. In stock guide, as I told you, stock guide is nothing but it is called as a strip guide. And the function of the stock guide is not to allow the free movement of the strip, not to allow the free movement of the strip. So this has been discussed already. So stock guide, then strippers, these are also helpful for locating the strips. So it doesn't allow the stripper, it doesn't allow strip to move up, so it's a kind of a locating device, isn't it? It's a kind of a locating device, so you can very well write in locating device, you can write stops, you can write strippers as a locating device for your strip. See, these not to be confused with the locating device of the drill jigs. Now here there are types of the stock guides. This also. So you have a stripper here. So stock guides are this. This is what is your stock guide is. This is a die block. Now to this die block, this stock guide is attached. Again, this is the stock guide. So these are the various types of the design. इसको बड़ा करता हूँ. I think now it is clear. See now, for example, now this here the stock guide, how it is. So you have a undercut here. आपको यहाँ पे ऐसा undercut है. Okay, so ये undercut में से आपका strip जा रहा है. Okay, this. So different designs of the stock guide. ये this is your plane. आपका plane है और यहाँ पे stripper का clearance है. Here it is stock guide is also, you know, pressed with the help of the spring loaded stripper. So यहाँ पे stock guide is floating. Now here spool or button. So this is what is button, okay, which is kept. So the purpose of this spool or button is like suppose tomorrow, suppose if we have strip width of some different size, okay, so you can use this, you know, button. You have to just change the button. अगर suppose today now it is say 20 mm का है, width is say 20 mm. Tomorrow suppose if you are using a strip of say 25 mm wide, ओके, सो आप छोटा बटन यूज करने का, तो छोटा बटन यूज करने का तो ऑटोमेटिकली ये जो साइज है, दिस साइज विल इंक्रीज. ओके, so this is another design, button type, then this is undercut type, then this is plain type stock guide. All right, now here in this case the punch is coming from down and the die block is from the top. Okay, so look here how the buttons are provided. Okay, so even if you remember these three types of stock guides, that is plain, then undercut type or T type, and button type, that is also sufficient. Then pilot is very simple, as I told yesterday. Pilot. अभी सब पायलट का फंक्शन क्या रहता है? टू लोकेट द स्ट्रिप. जैसा कि सी देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब कैसा रहता है, अभी यू विल गेट कंफ्यूज. अभी सर स्टॉप भी बोलते हैं, बटन स्टॉप भी रहता है फॉर लोकेटिंग. देन सर ऑल्सो बोल रहे हैं कि फीडर भी रहता है. फीडर इज ऑल्सो यूज फॉर लोकेटिंग at a distance of fixed pitch. Then there are pilots also. Understand, no?
सो ये कैसा रहता है, व्हेन यू वांट टू एक्यूरेटली लोकेट द स्ट्रिप, जब भी आपको स्ट्रिप एकदम एक्यूरेटली लोकेट करना है, सो दैट टाइम क्या करता है, जो बटन स्टॉप है ना उसमें थोड़ा रिबाउंड का एक्शन रहता है, एंड एज आई टोल्ड वो मैन्युअली पुल करता है, पुश करता है, और लोकेट करता है। ऑटोमेटिक स्टॉप्स आर प्रिसाइज, बट देयर आल्सो द लोकेशन कैन वेरी बिटवीन प्लस माइनस 0.2। अभी पायलट क्या करता है, बटन स्टॉप से रफली लोकेट हो जाता है स्ट्रिप। ओके, सो पायलट मोमेंट इट इज लोकेटेड रफली, मोमेंट इट स्टॉप्स, when it touches the button stop, the pilot enters into already punched hole. Pilot will enter into already punched hole. जो punched hole है उसमें आपका पायलट है वो घुस जाएगा, ठीक है, and it will locate that strip, precisely. It will locate that strip. तो आपका हल्का सा गैप आ जाएगा बटन स्टॉप और स्ट्रिप के बीच में, हल्का सा गैप आ जाएगा, बिकॉज पायलट इज अगेन रीलोकेटिंग द स्ट्रिप, जैसा ही वो अंदर पंच होल में जाता है वैसा। सो देर आर स्पेरिकल टाइप एंड फ्लैटन टाइप, राइट? So spherical types are more preferred because it will that pilot will enter the strip progressively. Then there are different type of pilots. Again, this question is asked in examination. Explain the different, state the different type of pilot. Explain any one. So these are the direct pilots. So we दिस इज अ प्रेस फिट, प्रेस फिट पायलट, मतलब यहाँ पे कैसा किया पायलट है, इट इज प्रेस फिटेड इनसाइड द पंच। ओके, सो अगर आपको निकालना है ये पायलट, हाँ, तो इस यहाँ से ऊपर से ऐसा आपको ठोकना पड़ेगा, ठीक है। दिस ब्लॉक इज डिफरेंट, दिस ब्लॉक इज डिफरेंट, तो आपको ऐसा थोड़ा ऊपर से हैमर करना पड़ेगा, सो दैट ये जो पायलट है वो नीचे आ। देन दिस इज पायलट विथ थ्रेडेड शैंक, सो दिस इज कंपैरेटिवली इजी। पायलट निकालना क्यों है, सपोज, हाँ, इफ यू चेंज द साइज, if you change the size of the, like suppose if the punched hole sizes differs, suppose 20 है, 25 है, 30 है, the punch hole sizes differ, then you need to change the pilots, you need to change the pilots. Okay, so अभी यहाँ से इधर क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो ब्लॉक है वो निकालना पड़ेगा और ऊपर से ठोकना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इट सिंस इट इज थ्रेडेड, इट इज इजी, इजंट इट? ये जो थ्रेडेड है आपको जस्ट यू हैव टू रोटेट इट एंड रिप्लेस इट, बराबर ना? सो यू डोंट हैव टू रिमूव दिस ब्लॉक। यहाँ पे आपको ये ब्लॉक, ये प्रेसिपिटेट है, यहाँ पे आपको ये जो ब्लॉक है या पंच है, ये पंच इट इज फिटेड टू दिस पंच होल्डर प्लेट, मे बी बाय डॉयल्स और बाय बोल्ट्स, तो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे निकालने का जरूरत नहीं है, ये जो थ्रेडेड है वो सीधा आप अनथ्रेड, मतलब जस्ट उल्टा डायरेक्शन में घुमाओ एंड देन दिस पायलट कैन कम आउट। देन दिस इज पायलट विथ सॉकेट स्क्रू। पायलट विथ सॉकेट स्क्रू में कैसा किया है, अभी देखो यहाँ पे, मतलब इफ देर इज अ स्पेस कंस्टेंट, अभी यहाँ पे कैसा है आपका थ्रेडिंग है, यहाँ पे किया है, थ्रेडिंग इसमें किया है पंच होल्डर में। अगर सपोज आपका पंच होल्डर इज थिन, इफ इट इज नॉट थिक इनफ सो दैट यू कैन डू द टैपिंग इनसाइड, देन हम लोग कैसे करते हैं, ये जो पायलट है उसके अंदर ही थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और ये जो पंच है, ये जो पंच है उसमें काउंटर बोर करने का और वहां से हम लोग स्क्रू डालने का, सॉकेटेड स्क्रू। बट व्हेन दिस इज यूज अगेन, if this punch holder plate, if it is not sufficiently thick, अगर इसका थिकनेस कम है, अगर से मान लो कि पंच होल्डर खाली आपका ये जो थिकनेस है 10 mm है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस थ्रेडिंग। अगर M10 का बोल्ट है तो कम से कम आपको 15 mm थ्रेडिंग करना पड़ेगा, तो इसके लिए यू हैव टू गो फॉर दिस। लेकिन अभी इसका भी ड्रॉबैक क्या है, सपोज इफ यू वांट टू चेंज द पायलट, देन अगेन यू हैव टू रिमूव दिस पंच एंड देन यू हैव टू रिमूव दिस सॉकेट। ओके, देन ये आपका है हेडेड पायलट, दिस इज योर हेडेड पायलट है, दिस इज सो हेडेड पायलट में अगेन जो पायलट है उसको हेड है, ठीक है, एंड देन इट इज फिटेड इन दिस पंच होल्डर प्लेट, स्क्रू डाउन, ठीक है, स्क्रू डाउन किए। But the best is this pilot with threaded shank, easy to remove. So the removal is very quick here. So this the direct pilot means which can be mounted directly. Now indirect pilot कैसे है? This indirect pilot में again you have headed, filled,
spring back and spring loaded field. Okay, so A is your headed. So this is what is your पायलट इज यानी आपका गाइड बुशिंग है. दिस इज व्हाट इज योर गाइड बुशिंग. ओके, सो इसमें से आपका पायलट गाइड हो रहा है. दिस दिस बुश इज फॉर गाइडिंग द पायलट. दिस बुश इज फॉर गाइडिंग द पायलट. रिमेंबर, ये जो बुश है वो पायलट को गाइड कर रहा है. ठीक है. और यहाँ पे एक ऐसा एक हार्डन प्लेट डाला है. यू सी दिस हार्डन प्लेट. ठीक है. बिकॉज जनरली क्या रहता है, ये जो पायलट्स है हाँ वो थोड़ा हार्डन रहता है. सो सिंस दिस इज हार्डन, ये जो प्लेट है, पंच होल्डर प्लेट है, वो सॉफ्ट रहता है तो वो डैमेज होने का चांसेस रहता है. इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे हार्ड प्लेट डालते हैं, हार्ड प्लेट, सो दैट दिस पंच होल्डर प्लेट डजंट गेट डैमेज. बिकॉज अगर ये पूरा पंच होल्डर प्लेट डैमेज हो जाएगा एंड दिस प्लेट इज से साइज ऑफ दिस प्लेट, पंच होल्डर प्लेट इज से 200 बाई 300, देन आपको ये पूरा का पूरा प्लेट रिप्लेस करना पड़ेगा. ओके, सो इंस्टेड ऑफ दैट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू पुट अ पंच होल्डर प्लेट लाइक दिस. हाँ, ये ऐसा एक छोटा सा हल्का सा प्लेट डाल दीजिए. So now here the pilots are not mounted directly, so that's why it is called as the indirect pilot. Okay, this is your indirect pilot. So again now this is again a indirect pilot. तो indirect pilot में क्या हो रहा है, you are using a bush. हाँ, you are using a bush. Here also you are using a bush for guiding the pilot. Why? Because the pilot is moving up and down, isn't it? So if you directly uh, pass the pilot through this plate, then this plate is going to worn out. So that's why it is always advisable that you use a hardened bush, and through which your pilot will pass. Through which your pilot will pass. Okay, so that's why it is indirect. So this is quill type. ये आपका कैसा था, headed type. So headed type is nothing but like you have a head here. अभी quill means what? It is a kind of a head only, but head का जो length है वो ज़्यादा रहता है. ओके, हेड का लेंथ है वो ज़्यादा रहता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द क्विल. जैसे कि 12 स्टॉक का क्विल, 12 स्टॉक लेथ मशीन में जो 12 स्टॉक जो रहता है उसमें जो क्विल रहता है दैट मूव्स इन एंड आउट. तो सिमिलरली यू हैव अ क्विल हियर जिसका कि लेंथ थोड़ा ज़्यादा रहता है, द लेंथ इज मोर. देन यू हैव स्प्रिंग बैक and you have spring loaded quill. So spring back में again this is the indirect pilot. So you have these bushings. Okay, now this there are two bushings provided because the pilot is working pilot and it is working in this punch as well as in this plate. So that's why bushes is provided. What is the use of bushes? Bushes are always harder. Why? Why the bushes are hardened? Because the punch or in case of drill jig, the drill is passing through that bush. अगर हम लोग bush use नहीं करेंगे, ओके, तो आपका कंस्ट्रक्शन डिजाइन सिंपल हो जाता है. लेकिन what will happen, आपका जो ड्रिल है it will pass through the drill plate. बराबर है. तो अगर bush if you are not using, so your drill plate will get damaged because the drill is hardened, isn't it? So your plate will wear out faster. ऐसे. So that's why we have to use the hardened bush. अभी क्या है, ये hardened bush, these bushes are hardened, so that doesn't get damaged easily. Okay, and even if it get damaged easily, you can replace it. आप इसको replace कर सकते हो. So यहाँ पे है आपका spring loaded pilot है. Spring loaded pilot है, it is used spring backed or spring loaded quill. इसमें इसमें डिफरेंस इज ओनली दैट यहाँ पे जो ये जो लेंथ है वो ज़्यादा रहता है. सो दिस इफ इट इज स्प्रिंग लोडेड इट कैन फ्लोट वर्टिकली. आपका जो पायलट है वो इट कैन फ्लोट वर्टिकली. सो अगर आपका थिकनेस में अगर वेरिएशंस है, सो द वेरिएशंस इन द थिकनेस कैन बी टेकन अप इजीली. So that was your indirect pilot. Okay. So now if you have any doubt you please ask, and I'm sorry that the connectivity issue in setup, else you can take the break. Any doubt? Okay, fine. Okay. Thank you. Thank you very much.